Ji, dear students, welcome to Broadway Educators again. Now we are going to start your next unit of multimedia system subject, that is unit 6, and its name is hardware. And in this unit we will learn about the hardware devices and their functions, their features. Okay, so here is a little bit introduction of this chapter. Well, in producing a multimedia program, we need to gather data for the 5 basic elements of multimedia: text, animation, graphics, video and audio by using the hardware. Right, if you want to produce any particular multimedia program, then you need to gather the information and some basic elements of multimedia, which may include the text, animation, graphics, audio, video. These are the basic elements for creating any program or software under multimedia system. And to edit the elements, we need some special kind of editing softwares, right? If you want to edit these elements, then you require some special editing software which will help to do any kind of modification. The most common hardware used are, इसमें आप कौन-कौन से commonly hardware use कर सकते हो? These are the scanners or video cameras, camera for the still photos, and audio devices and video capture devices. And the next point is each of these hardware has its functions and characteristics, right? जो आप इनमें से कोई भी हार्डवेयर डिवाइस अगर आप यूज करने जा रहे हो, whether it is a scanner, whether it is a video camera, so हर एक की अपनी इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज होती हैं, उसके अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, and knowing the functions of the hardware and how to use them are important, right? उन सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की नॉलेज होना और उनको कैसे आपने यूज करना, दिस इज क्वाइट important. This is very significant, and this will enable us to integrate the basic elements of multimedia into a program, right? If you know about the basics of these elements and these devices, only then you can create the multimedia programs easily and smoothly. So here is the first topic in this unit, which is Macintosh versus Windows. So ये भी आपके पास एक तरह की कंप्यूटर बेस्ड मल्टीमीडिया डेवलपमेंट के अंदर हम इसको यूज करते हैं. तो इनमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो जिनको ये आगे फर्दर शेयर कर सकते हैं. So these two types of desktop computer used for multimedia development, they are Apple, Mac and the Microsoft Windows based personal computer or PC. ठीक है. सो दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर कौन से फीचर्स हैं या कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको शेयर किया जा सकता है, जिनके यहाँ फीचर्स होते हैं जो दोनों के अंदर यूज किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं. सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ दीज components. The first one is processor. The processor or central processing unit is the key component and controls the rest of the computer and executes the programs, right? जो processor है आपके पास, जिसको हम CPU भी बोलते हैं, central processing unit भी बोलते हैं, this is a key component and it helps to control all the computer and execute its programs. मतलब उसके जितने भी operations होते हैं उनको control करने में, उनको manage करवाने में ये आपकी help करवाता है. And the second component is cache. So cache is a small amount of very high speed memory built into the processor for doing immediate calculations, right? जो cache है वो आपके पास smallest एक तरह की memory मानी जाती है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है और ये आपके पास कैलकुलेशंस करने के लिए यूज की जाती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज रैम मेमोरी. RAM stands for random access memory and it is the working memory where the current application program resides, right? जो आपके currently जितने भी आपके program जो execute हो रहे हैं वो इस memory के अंदर reside करते हैं. And the next point is system bus. So what is system bus? Basically this bus connects all the necessary devices to the processor. So आपके पास जो सिस्टम बस होती है इसको हम क्यों यूज करते हैं, जितने भी आपकी डिवाइसेस हैं, जितने भी आपकी रिक्वायर्ड डिवाइसेस हैं, उनको आगे फर्दर प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करवाना, ये किसका काम होता है, सिस्टम बस का. There are other buses that connect to the system bus like SCSI for hard devices, right? इसके बिना आगे फर्दर और बसेस भी होती हैं जिसको हम यूज करते हैं to connect to the system bus, जो कि आप जैसे SCSI को हम यूज करते हैं हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए. And the next point is motherboard. The processor, cache, RAM and system bus all reside on a main printed circuit board that are called
मदरबोर्ड, मतलब जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो प्रोसेसर है या कैश है या रैम है, उन सारी जो आपके डिवाइसेस हैं उनको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है या फिर वो कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे फर्दर कनेक्टेड होती हैं, उसको बोला जाता है मदरबोर्ड। उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating system manages the loading and unloading of applications and files and the communication with other peripheral devices like printers. So operating system आपके पास एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जो आगे आपके कंप्यूटर सिस्टम के या आपके सिस्टम की जितने भी फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको कंट्रोल करवाने में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन के अंदर ये हमारी हेल्प करता है, और अपनी आपकी फाइल्स को उनकी लोडिंग के लिए और उनकी अनलोडिंग के अंदर ये आपकी हेल्प करता है. And the next point is storage devices. As its name is signifying that these are the storage devices which are used to store the information or data. So application programs and working file are saved longer term on different kinds of storage devices, right? आपके जितने भी application programs है या working files हैं उनको longer term मतलब काफी लंबे समय के लिए अगर आप उनको स्टोर करके रखना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे काफी सारी अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं. एंड दीज में इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव्स, CD ROMs या फ्लॉपी ड्राइव्स. दीज आर द डिवाइसेस व्हिच यू कैन यूज फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन. And the next point is input and output devices. So these are the devices which you can use in order to provide the input to the system and in order to display the output also. So connected to the system bus are a number of other devices that control the other essential components of a desktop computer, which may include the monitor, mouse, keyboard, speakers, printer, scanner, etc. These are some input and output devices which are very important part in forming a system. And the next point is expansion bus. What is an expansion bus? Most desktops should include slots into which other non-standard devices can be installed. So these devices can be installed with the help of expansion buses and with the help of these slots. So the next topic is connections. What is a connection? Basically, establishing a connection between two multimedia devices is very easy now using a lot of connecting devices, right? अगर आपने दो multimedia devices के अंदर connection बनाना है, उनको एक दूसरे के साथ connect करना है, so this is very easy nowadays with the help of connecting devices. There are many hardware devices which are generally used for making a connection between two or more devices like cables. ओके तो यहाँ पे आपके पास काफी सारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए. सो हियर वी आर डिस्कसिंग सम इंटरफेसेस एंड कनेक्टिंग डिवाइसेस. हमारे पास यहाँ पे कुछ डिवाइसेस की लिस्ट है जिनको हम वन बाय वन इलेबोरेट करेंगे. सो द फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम एब्रिविएशन IDE के नाम से भी रेफर करते हैं. IDE stands for both Integrated Device Electronics and Integrated Development Environment. Done. And the second point is Integrated Drive Electronics or IDE. It is a standard interface for connecting a motherboard to storage devices. मतलब मदरबोर्ड को आगे फर्दर आपके स्टोरेज डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग IDE को यूज करते हैं, लाइक हार्ड ड्राइव्स एंड CD ROM और DVD ड्राइव्स. The original IDE had a 16-bit interface that connected two devices to a single ribbon cable. तो आपके पास जो original IDE थी उसके अंदर कितने बिट का इंटरफेस था? 16 बिट का. And the third point is IDE's development increased data transfer rate, speed and reduced storage device and controller issues. तो जो IDE की जो आगे फर्दर डेवलपमेंट हुई थी उसने क्या किया? डाटा ट्रांसफर के रेट को एनहांस किया एंड स्टोरेज डिवाइस या फिर कंट्रोलर उसके जो इश्यूज थे उनको रिड्यूस किया या उनको कम कर दिया या उनको डिडक्ट किया. And the last point of this topic is IDE, also known as Advanced Technology Attachment, that is also referred to as ATA, or Intelligent Drive Electronics, that is known as IDE. So here is a basic interface of IDE. And the next point in this topic is SCSI, which stands for Small Computer System Interface. SCSI
is a hardware bus specification for connecting peripherals to a computer using a parallel transmission interface. SCI की हेल्प से साथ हम लोग क्या करते हैं, जितनी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस है उनको कंप्यूटर के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पैरेलल ट्रांसमिशन इंटरफेस. और a small computer system interface SCSI is a standard interface for connecting peripheral devices to a PC. We can also define it in this single line form. And the next point is, depending on the standard, generally it can connect up to 16 peripheral devices using a single bus including one host adapter. Right, मतलब इसकी रेंज कितनी है कि ये up to 16 peripheral devices को connect कर सकती है with the help of single bus. And the next point is, SCSI is used to increase the performance, deliver faster data transmission, and provide the larger expansion for devices like CD-ROM drives, scanners, DVD drives, and CD writers. So ये इन सारी चीज़ों की मतलब उसकी फंक्शनिंग को एनहेंस करती है, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, एंड जो आपके डाटा का ट्रांसफर है उसको डिलीवर करवाना, उसमें मतलब उसको फास्ट करना, उसकी स्पीड को और फास्ट करना, उसमें आपकी हेल्प करती है. So here is the interface of this device, and the next component is EIDE. It stands for Enhanced Integrated Drive Electronics. EIDE is an improved version of the IDE drive interface. So ये IDE की ही एक आगे further enhanced improvement version थी, which provides faster data transfer rates than the original standard. मतलब ये आपको आगे further जो data transfer का rate है उसको और इसने fast किया उसके rate को rather than the original standard. While the original IDE drive controllers supported transfer rates of 8.3 Mbps, EIDE can transfer data up to 16.6 Mbps, which is twice as fast, right? जो आपके पास ओरिजिनल आईडी थी उसकी कैपेसिटी कितनी थी 8.3 Mbps डाटा को ट्रांसफर करवाने की, लेकिन EIDE का ट्रांसफर रेट कितना है 16.6 Mbps, जो कि उससे डबल है. And the second point is, enhanced integrated drive electronics is the hardware drive interface that succeeded integrated drive or device electronics, also known as ATA और ATA1. तो ये जो आपके पास EID है ये एक ऐसी हार्ड ड्राइव डिवाइस मानी जाती है जिसने आगे फर्दर IDE को भी उसको सक्सीड करवाने में हेल्प की, जिसको हम ATA या और ATA1 भी बोलते हैं. And the next point is, the interface acts as an intermediary between the computer and the mass storage devices. Right? इसको हम एक तरह का intermediary भी मानते हैं, किसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में या फिर storage devices के बीच में. And the next point is, EIDE exists in the market as a new version of IDE mass storage devices and their interface standard developed by Western Corporation. तो ये आपको मार्केट में एक तरह की IDE की न्यू वर्जन के हिसाब से भी आपको अवेलेबल मिलती है, एंड इसको किसने आगे फर्दर डेवलप किया था, वेस्टर्न कॉर्पोरेशन की तरफ से ये डेवलप की गई थी. The speeds at which it works is much higher than the previously existing standards. We have already discussed this point कि इसकी जो स्पीड है वो previously standards से ज़्यादा है. So EIDE is sometimes called fast ATA or fast IDE or ATA2. So this was some important points which were related to EIDE. Here is the next topic, which is ATA. It stands for Analog Telephone Adapter. So ATA is a device that is used to connect a standard telephone to a computer or network so that the user can make calls over the internet, right? ATA आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड टेलीफोन को कंप्यूटर या फिर एक नेटवर्क के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन मेक द कॉल्स ओवर द इंटरनेट. Internet-based long-distance calls can be substantially cheaper than calls transmitted over the traditional telephone system, right?
जो आपकी इंटरनेट बेस्ड कॉल्स होती हैं वो लेस एक्सपेंसिव मानी जाती हैं rather than the telephone system. And ATAs are typically cheaper than the specialized VoIP phones that connect directly to a computer's universal serial bus port. Right, these are considered to be cheaper and less expensive rather than VoIP phones. Or we can also define ATA as an analog telephone adapter, which provides an interface that allows you to use a standard telephone to communicate over an IP network like internet. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये आपके पास एक ऐसा इंटरफेस है जिसकी हेल्प से आप कॉल्स को पॉसिबल कर सकते हो या फिर हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द आईपी विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल ओवर द इंटरनेट. Okay, the name analog telephone adapter was originated by Cisco for their adapter, and other manufacturers may use slightly different acronyms, but essentially they mean the same thing. Right, जो आपके आटा है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं एनालॉग टेलीफोन अडेप्टर, इसको ओरिजिनली किसकी तरफ से ओरिजिनेट किया गया था, एमर्ज किया गया था सिस्को की साइड से फॉर देयर अडेप्टर. बट अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कुछ और एक्रोनिम्स भी यूज करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सेम ही है. मतलब जो इसका मीनिंग है या इसका जो मेन एम है वो सेम है. So here are some features of an ATA. The most common features of an ATA are, the first one is ability to support VoIP protocols. So the more protocols one can support, the better it is, right? अगर जो एक जितने protocols को support कर सकता है वो उतना ही better माना जाता है. SIP and H.303 are supported on all new ATAs today. New ATA के ऊपर जो हमारी nowadays use की जा रही हैं उनमें SIP और H.303 these are majority supported. And the second point is ports. An ATA should provide at least one LAN, which is also known as RJ45 port, and one RJ11 port. तो आटा जो है एटलीस्ट वो आपको 2 ये पोर्ट प्रोवाइड करवाती है, सो एज टू मेक द इंटरफेस बिटवीन द फोन नेटवर्क एंड द VoIP सर्विस. सो आप अपने फोन नेटवर्क के बीच में और VoIP के सर्विस के बीच में एक इंटरफेस जो है उसको बिल्ड कर सको. And some ATAs even provide additional ports, like for example we can also say that RJ45 port to connect to a computer. And the third point is the call switching, right? Many people use PSTN and VoIP interchangeably. The call switching feature in the ATA allows you to easily switch between these two, right? आप इस ATA की हेल्प से आप PSTN और VoIP के बीच में एक तरह की स्विचिंग इजीली कर सकते हो. And the next point is standard service features. It is common and practical today to have several services features like caller ID, call waiting, call transfer, call forwarding, etc. A good ATA should support all these features. मतलब जो आपकी ATA है उसके अंदर ये सारी जो सर्विसेज है वो उनको सपोर्ट करती है. And the next point is three-way conferencing. Many ATAs come with three-way conferencing support, which allows you to talk to more than one person at the same time. This proves to be very useful, especially in a business context, right? आपकी जो ATA है उसके अंदर कौन से फीचर्स हैं? कॉन्फ्रेंस के भी फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से आप एक से ज्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हो सेम टाइम पे. एंड इस चीज को हम लोग बिजनेस के अंदर कई बार कोई मीटिंग है या फिर कोई इम्पोर्टेंट जो आपने टॉपिक डिस्कस करना है उस टाइम पे आप this is very useful feature माना जाता है. And the next point is power failure tolerance, right? The ATA runs on electronic power, okay, and it normally stops working in case of a power cut. This should not mean that your communication should be completely paralyzed. A good ATA should automatically switch to PSTN line default in case there is a power failure. So आपके ATA के अंदर ये फीचर होता है, अगर आपके लाइट ऑफ हो जाती है तो आपके ATA जो है वो ऑटोमेटिकली PSTN के साथ स्विचिंग कर लेती है, जिसकी हेल्प से आपका जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहता है rather than stopping. And the last point is interoperability. In a company context, an ATA may be part of an already complex hardware structure, right? For this reason, a good ATA should be complete and
interoperable to a maximum with other hardware devices. These are only the most common features that should make a good ATA. तो आपके पास इंटरऑपरेटेबिलिटी की हेल्प से क्या हो सकता है, जो आपकी आटा है वो और जो दूसरी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके साथ इजीली कंप्लायंट, मतलब उनके साथ कंपैटिबिलिटी बिठा सकती है, इंटरऑपरेबल होती है, जिसकी हेल्प से मतलब आप अपने इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखते हो. सो एक काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इसका फीचर माना जाता है आटा का. So the next point is USB. USB is what? Which stands for Universal Serial Bus. So USB is the most common type of computer port used in today's computers. So ये एक बहुत ही ज़्यादा common port मानी जाती है जिसको हम computers के अंदर use करते हैं. USB is one of the most common interfaces for connecting a variety of peripherals to computers and providing the relatively local and small levels of data transfer, right? With the help of USB, you can also connect the peripheral devices to your computer, and this helps in performing the data transfer. And the third point is it connects the peripheral devices like digital cameras, mic, keyboards, printers, scanners, media devices, external hard drives and flash drives. तो जितनी भी आपकी ये सारी devices हैं उनको आप easily अपने system के साथ connect कर सकते हो with the help of USB. And the next point is with the help of a few USB hubs, you can also connect up to 127 peripherals to a single USB port and use them all at once. Right, जो आपके पास USB hubs होते हैं उनकी हेल्प से आप up to 127 peripherals को connect कर सकते हो to a single USB port and उनको एक सेम टाइम के ऊपर आप उसको यूज भी कर सकते हो. And the last point is the Universal Serial Bus USB. It provides a very simple and effective means of providing connectivity, and as a result, it is very widely used. Because ये आपको connectivity provide करवाती है जिसकी हेल्प से आप easily data को transfer कर सकते हो between the two devices. That's why this is widely used by majority of people. And here are some types of USB connectors. In the past, the majority of USB cables were one of the two types, type A and type B. Okay, the first point is the USB 2.0 standard is type A. So आपके पास जो USB 2.0 standard है वो किस टाइप में आती है, टाइप A में. It has a flat rectangle interface. उसके पास एक rectangle shape का interface है that inserts into a hub or USB host which transmits data and supplies power. Done. A keyboard or mouse are common examples of type A USB connector, right? तो आप जो type A के अंदर आप USB यूज कर सकते हो तो उसमें भी आप डाटा ट्रांसफर का फीचर यूज करते हो, उसमें आपकी वो हेल्प करवाता है. तो इस काइंड के अंदर कौन सी डिवाइसेस आ सकती हैं, माउस और कीबोर्ड. ये आपकी एक तरह के USB 2.0 या टाइप A की एग्जांपल्स मानी जाती हैं. In the second point, type A, type B USB connector is paired with slanted exterior corners. It is connected to an upstream port that uses a removable cable like a printer. The type B connector also transmits data and supplies power, and some type B connectors don't have a data connection and are used only as a power connection. So ये आपके पास टाइप B के अंदर कौन सा है जिसके अंदर किस टाइप का इंटरफेसेस है, एक्सटीरियर कॉर्नर्स. So the next point is the USB process, right? USB के टाइप से आपने पढ़ी, USB का मीनिंग क्लियर है. तो here we have the topic of processing under USB या फिर USB process. मतलब उसकी वर्किंग क्या है, कौन से मेन पॉइंट्स है जो इस चीज के अंदर कंटेन किए जाते हैं. When the host powers up, it queries all of the devices connected to the bus and assigns each one an address, right? जब आपका होस्ट है जो पावर अप करता है तो उस टाइम पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं बस के साथ उनके लिए क्वेरी की जाती है, उनको सबको वन बाय वन एड्रेस भी असाइन होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन्यूमरेशन. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एन्यूमरेशन बोला जाता है. डिवाइसेस आर आल्सो एन्यूमरेटेड व्हेन दे कनेक्ट टू द बस, right? The host also finds out from each device what type of data transfer it wishes to perform, right? Host
सारी डिवाइसेस से ये एक बारी क्वेरी करता है कि वो किस टाइप का डाटा जो है वो आगे फर्दर ट्रांसफर करना चाहती हैं. So here are some points that we will cover in this topic. The first one is interrupt. A device, for example, a mouse or a keyboard, which will be sending very little bit data, would choose the interrupt mode. जहाँ पे आपका जो आपका माउस है या कीबोर्ड है वो मतलब काफी छोटे अमाउंट के डाटा सेंड करते हैं एक टाइम पे, तो वो इंटरप्ट मोड को चूज कर सकते हैं. एंड द सेकंड पॉइंट इज बल्क. A device like a printer, जो आपका प्रिंटर है, which receives data in one big packet, right? जब आप उसको प्रिंटिंग की ऑप्शन या उसको प्रिंटिंग की कमांड सेंड की जाती है तो वहां पे एक बल्क के अंदर डाटा जो होता है वो रिसीव किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ प्रिंटर, एंड इट आल्सो यूजेस द बल्क ट्रांसफर मोड. सो जो प्रिंटर डिवाइस होती है वो कौन सा मोड चूज करती है? बल्क. A block of data is sent to the printer, done and verified to make sure it's correct. And the third point is isochronous. A streaming device like speakers, they uses the isochronous mode. Data streams between the device and the host in real time and there is no error correction. And the host can also send commands or query the parameters with the control पैकेट्स. सो आपकी जो ये डिवाइसेस है या स्पीकर्स हैं वहां के अंदर हम लोग किस मोड के अंदर काम कर सकते हैं? स्ट्रीमिंग डिवाइसेस के अंदर, क्योंकि वहां पे डाटा की जो स्ट्रीम है उसको एक्सेप्ट किया जाता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज that we are having in this unit is firewire. So what is a firewire? It is an IO interface that was developed by Apple computers, right? ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस था जिसको एप्पल कंप्यूटर्स ने डेवलप किया था. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज IEEE 1394, which is the technical name standardized by IEEE, right? इसको एक टेक्निकल नेम भी दिया गया है जिसको हम कैसे रेफर करते हैं? IEEE 1394. And the third point is firewire is a method of transferring information between the digital devices, especially audio and video equipment. So ये आपके पास एक तरह का इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है बिटवीन द डिजिटल डिवाइसेस, कौन सी? ऑडियो या फिर वीडियो इक्विपमेंट्स. And the next point is as an external connector similar to USB port that provides high speed connection between a computer and peripheral devices. इसको आप as an external connector भी यूज कर सकते हो जो कि एक USB की तरह ही काम करता है. And it also provides a high speed connection. किसके बीच में? कंप्यूटर के बीच में और peripheral devices के बीच में. And firewire is also known as a fast. The latest version achieves speeds up to 800 Mbps. तो ये एक तरह की मतलब काफी फास्ट स्पीड जो कंपोनेंट माना जाता है. And the next point is you can connect up to 63 devices to a firewire bus. आप 63 डिवाइसेस के अप टू मतलब जितनी डिवाइसेस हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हो टू अ फायरवायर बस. एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम both support it. मतलब दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है whether it is Windows and whether it is Mac operating system, दोनों इसको सपोर्ट करते हैं. And the next point is there are two primary versions of the firewire interface. कौन सी है? Firewire 400 and Firewire 800. So these are the two versions of firewire interface. And the next point is Firewire USB. So the first point is अगर हम बात करें कि फायरवायर वर्सेस यूएसबी तो इन दोनों में कौन सी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट है. USB and Firewire didn't start out as competing technologies. Firewire, which was developed by Apple along with a few other tech companies, was supposed to provide high-speed connections to devices that needs them, right? जो Firewire थी उसको Apple की साइड से मतलब डेवलप किया गया था with the help of some also other companies too. So इसको क्या एक तरह का माना गया था? एक तरह का high-speed connection के लिए between the devices जिनको इसकी जरूरत थी. So USB, which stands for Universal Serial Bus and developed by a group of companies that include Intel and Microsoft, and it was initially intended to replace low-speed connections that are used by most computer peripherals. तो USB को एक तरह का मतलब फास्ट स्पीड कनेक्शंस के लिए ही इमर्ज किया गया था जो कि मतलब प्रीवियस वर्जन्स में नहीं मिल रही थी. And the second point is initially
The speed of USB devices can only reach up to 1.5 Mbps, which is terribly slow, but quite sufficient for the devices that it was meant to work for. जो आपके पास इनिशियली जो स्पीड थी उसकी USB की थी वो कितनी उसकी रेंज थी 1.5 Mbps, वो स्लो मानी जाती है, बट किसी किसी डिवाइस के लिए वो थोड़ी बहुत सफिशिएंट मानी जा सकती है. Firewire leaves USB in the dust in terms of speed reaching up to 400 Mbps. So जो Firewire है उसकी क्या स्पीड है? 400 Mbps. This is often attributed to the level of complexity in the circuitry. USB devices depend on the host controller, while each Firewire node is independent of each other and communicate to other nodes on its own. जो USB है वो host controller के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि आपकी Firewire जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर सकती है to the other nodes. So it was some points which were related to Firewire and USB. And here is the next topic, which is storage devices. So what is the storage devices? We also refer it as the device that can store the information and the data within it. So a storage device is any type of computing hardware that is used for storing, porting और extracting the data files and objects, right? ये आपके पास एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस माना जाता है, ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट माना जाता है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? फाइल्स को या ऑब्जेक्ट्स को उनको स्टोर करने के लिए या उनको पोर्ट करने के लिए या फिर उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. Storage devices can hold and store information both temporary and permanently, right? जो आपकी storage devices है वो डाटा को temporary भी या फिर उनको permanently भी store करती है. They may be internal or external to a computer, server or computing devices. मतलब आपकी storage जो devices हैं, they can be used in both modes, whether it is internal or external. So a storage device may also be known as a storage medium or storage media, depending on whether it is seen as discrete in nature. For instance, a hard drive versus some hard drive space, right? So here is a list of some computer storage devices. It can include floppy diskette, CD-ROM disk, CDR, CDRW disk, cloud storage, etc. This is a little bit list of names. This is the first type of storage device, which is RAM. It is commonly used in computer systems. RAM, which stands for random access memory, it is a hardware device generally located on the motherboard. We knew that कि आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपकी एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होती है आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर, एंड इट आल्सो एक्ट्स एज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू. Then it also allows the CPU to store data, program and program results when you switch on the computer, right? तो आपके CPU को ये डाटा को स्टोर करने में, उसको प्रोग्राम करने में, उसके रिजल्ट्स को मतलब अलाउ करने में ये हेल्प करती है. And it is the read and write memory of a computer, which means the information can be written to it as well as read from it, right? तो ये read and write दोनों मोड में काम करती है, मतलब कि आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन को राइट भी कर सकते हो और उसको रीड भी कर सकते हो. This is the basic interface of random access memory. Here is the second point of it. RAM is a volatile memory. तो ये एक volatile memory मानी जाती है by its nature, which means it doesn't store data or instructions permanently. मतलब volatile का मतलब ये है कि वो डाटा को permanently store नहीं करती है. अगर कंप्यूटर की स्विच ऑफ हो जाती है या लाइट चली जाती है तो जो डाटा होता है उसके अंदर वो क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है. When you switch on the computer, the data and instruction from the hard disk are stored in the RAM. For example, when the computer is rebooted and when you open a program, the operating system and the programs are loaded into RAM. जब भी आपको कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो आपके जितने प्रोग्राम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और अदर प्रोग्राम्स होते हैं रैम के अंदर लोड किए जाते हैं, जनरली फ्रॉम एन HDD हार्ड डिस्क ड्राइव्स. And CPU utilizes this data to perform the required tasks. As soon as you shut down the computer, the RAM loses the data.
So the data remains in the RAM as long as the computer is on and lost when the computer is turned off. जब तक आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन रहता है तब तक इसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रैम के अंदर रहती हैं और उनके ऊपर जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है तो आपकी जो रैम है वो डाटा को लॉस कर सकती है, मतलब उसमें से डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। द बेनिफिट ऑफ लोडिंग डाटा इनटू रैम इज दैट रीडिंग डाटा फ्रॉम रैम इज मच फास्टर देन रीडिंग फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव. Right, it is very fast in nature as compared to the hard disk drives. And here is the next storage device, which is read-only memory. It is also abbreviated as ROM. ROM stands for read-only memory, and it is a memory device or storage medium that stores information permanently. Done. It is also the primary memory unit of a computer along with the random access memory. It is also called read-only memory as we can only read the programs and data stored on it, but we can't write onto it. इसको इसलिए रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है बिकॉज हम इसके ऊपर डाटा को राइट नहीं कर सकते. वी कैन जस्ट रीड द डाटा दैट इज स्टोर्ड इन द ROM. And the second point is the manufacturer of ROM fills the program into the ROM at the time of manufacturing the ROM. Done. तो इसके अंदर जो programs है उनको कब program किया जाता है? On the time of manufacturing of the ROM. After this, the content of ROM can't be altered. उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके कंटेंट्स को ROM के कंटेंट्स को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, विच मीन्स यू कांट रीप्रोग्राम. इसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, डाटा को रीराइट नहीं किया जा सकता, इसके कंटेंट्स को हम इरेज नहीं कर सकते. एंड द नेक्स्ट डिवाइस इज फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क. Floppy disk is what? It is a portable storage medium consisting of a square plastic case containing a thin disk coated with magnetic material that is inserted into a drive to read and write the data. तो ये आपके पास एक स्क्वायर फॉर्म की एक प्लास्टिक का केस माना जाता है जिसके अंदर आपका एक डिस्क कोटेड होती है विद द मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको आप अपनी ड्राइव के अंदर insert करते हो in order to read or write the data. It was the floppy disk was quite popular during the 1970s and till the 1990s. Next जो आपके पास point है, a floppy disk is a magnetic storage medium for computer systems. तो ये आपके पास एक magnetic kind of storage medium माना जाता है computer systems के अंदर. The floppy disk is composed of a thin, a flexible magnetic disk that is sealed in a square plastic carrier. In order to read and write data from a floppy disk, the computer system must have a floppy disk drive, right? जो floppy disk के ऊपर से अगर आप डाटा को रीड या राइट करवाना चाहते हो तो then your computer system must have a floppy disk drive. अगर आपके पास floppy disk drive है then you can insert them into it and easily your computer system can read and write data from a floppy disk. Floppy disk is also referred to simply as a floppy. इसको हम सिर्फ floppy के नाम से भी रेफर करते हैं. Since the early days of personal computing, floppy disks were widely used to distribute software, transfer files and create the backup copies of data. मतलब इनिशियल टाइम के ऊपर इसको काफी यूज किया जाता था. पहले रिसेंट टाइम्स के अंदर फ्लॉपी डिस्क्स वर commonly used by majority of people in order to transfer files या फिर डाटा के बैकअप को रखने के लिए. When hard drives were still very expensive, floppy disks were also used to store the operating system of a computer. Then, so here is a basic interface of floppy disk, and these are three kinds of floppy disk which differentiate in the form of their dimensions. Next point in this topic is a number of different types of floppy disk have been developed. The size of floppy got smaller and the storage capacity increased. जैसे ही floppy disk का size जो था वो छोटा होता गया तो वैसे ही उसकी capacity जो थी वो increase होती गई. However, in the 1990s, other media, including the hard disk drive, zip drives, optical drives and USB flash drives, they started to replace floppy disk as the primary storage medium.
सो 1990s के अंदर जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स थी या जिप ड्राइव्स थी या ऑप्टिकल ड्राइव या जो हमारी यूएसबी की फ्लैश ड्राइव्स थी, तो उन्होंने आगे फर्दर फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया था एज अ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम. So what is a hard disk drive? When you save data or installed programs on your computer, the information is typically written to your hard disk. जब हम अपने डाटा को राइट करते हैं या उसको अपने प्रोग्राम्स को आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, द इंफॉर्मेशन जो है वो टिपिकली हार्ड डिस्क के ऊपर रिटन हो जाती है. द हार्ड डिस्क इज अ स्पिंडल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क्स कॉल्ड प्लैटर्स and it record and store the information. Because the data is stored magnetically, information recorded to the hard disk remains intact after you turn your computer off. क्योंकि वो मैग्नेटिकल फॉर्म में डाटा जो है आपका स्टोर किया जाता है, दैट्स वाई वो एज इट इज आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर रिमेन करता है, उसके ऊपर रिजाइड करता है, चाहे आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दो. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड रैम. तो यही एक मेन फीचर है जो रैम और हार्ड डिस्क के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है. और मेमोरी विच इज रीसेट व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज टर्न्ड ऑफ. रैम जो है मतलब जब उसके अंदर डाटा जो होता है वो लॉस्ट होता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं. द हार्ड डिस्क इज हाउस्ड इनसाइड द हार्ड ड्राइव, राइट, which reads and writes data to the disk. The hard drive also transmits data back and forth between the CPU and the hard disk. And when you save data on your hard disk, the hard drive has to write thousands, if not millions, of ones and zeros to the hard disk. It is an amazing process to think about, but may also be a good incentive to keep a backup of your data. In simple terms, we can say that जो हार्ड डिस्क होती हैं वो आपके पास एक तरह की परमानेंट है और वो एक बहुत अच्छा फीचर माना जाता है, बहुत अच्छा एक ऐसा कंपोनेंट माना जाता है जहाँ पे आप अपनी बल्क स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट. सो हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक. Zip, ZAS, SyQuest and optical storage devices. What are this? इनकी यहाँ पे हमने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है तीनों पॉइंट्स की. The zip drive is a removable floppy disk storage system that was introduced by Iomega in late 1994. जो आपकी zip drive थी वो कब इन्वेंट हुई थी? During the 1994 and considered medium to high capacity at the time of its release. Zip disks were originally launched with a capacity of 100 MB, then 250 MB and finally 750 MB. तो जब इनको एक तरह का हाई कैपेसिटी का मीडियम माना जाता था जब ये रिलीज हुई थी, एंड उनको जब लॉन्च किया गया उनकी कैपेसिटी कहाँ से थी? 100 MB से वो कहाँ तक पहुंची? 250 MB तक, एंड फाइनली वो कहाँ तक पहुंची? 750. And the second point is a JAS. A JAS drive is a small portable hard disk drive that is used primarily for backing up and archiving personal computer files. As उसका नेम ही जो आपको डिफाइन कर रहा है वो क्या है? आपके पास एक तरह की ऐसी ड्राइव है जिसको हम यूज करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जितनी अपनी फाइल्स होती हैं उनको बैकअप करके रखने के लिए. The JAS drive is sold by Iomega Corporation, the same company that developed the zip drive, right? इसको किसकी साइड से सेल किया गया था? आयोमेगा कॉर्पोरेशन की साइड से, जिसने जिप ड्राइव को भी इन्वेंट किया था, उसको डेवलप किया था. बोथ द जैज ड्राइव एंड द डिस्क्स कम इन 2 साइजेस. कौन से साइज? 1 GB एंड 2 GB. एंड द थर्ड पॉइंट इज SyQuest technology. It was an early entrant into the hard disk drive मार्केट फॉर पर्सनल कंप्यूटर. तो ये एक मतलब ऐसी एंट्रेंट थी जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव से भी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं मार्केट के अंदर. एंड द कंपनी वाज फाउंडेड ऑन जनवरी 27, 1982. ये कंपनी कब फाउंड की गई थी? जनवरी 27 ड्यूरिंग 1982. इट्स अर्लीस्ट प्रोडक्ट्स वर द SQ-306R, a 5 MB 3.9 inches cartridge disk drive and associated Q-Pack cartridge for IBM XT compatibles. Okay,
एंड द फोर्थ पॉइंट इज द ऑप्टिकल डिस्क. जो आपके पास ऑप्टिकल डिस्क है, व्हाट इज एन ऑप्टिकल डिस्क? It's any computer disk that uses optical storage techniques and technologies to read and write data. ठीक है, तो आपके पास एक तरह की ऐसी कंप्यूटर डिस्क है जो आगे फर्दर ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स को या उसकी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट द डाटा. इट इज अ कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क दैट स्टोर्स डाटा डिजिटली एंड यूजेस लेजर बीम्स. राइट, इसके अंदर भी डाटा को स्टोर किया जाता है, उसको रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम्स in order to read and write data. And the data is transmitted from a laser head mounted on the optical disk drive. So that's why this is known as optical disk, which uses the laser beams in order to read and write the data. An optical disk is primarily used as a portable and secondary storage device. It can also store more data than the previous generations of magnetic storage media and has a relatively longer lifespan. Compact disc (CDs), digital versatile video disc (DVD), and Blu-ray disc. They are currently most commonly used forms of optical discs. These discs are generally used to distribute software to customers and to store the large amounts of data like music, images and videos, and in order to transfer data to different computers या फिर devices, and in order to back up data from a local machine. So these were some important points which were related to the optical disk drives. Here is the topic of DVD, which is also a storage device. It stands for digital versatile disk. The DVD is an optical disc storage medium similar to a compact disc. It is also quite similar to CDs, but with enhanced data storage capacities as well as with higher quality of video and audio formats. तो ये भी सेम आपकी compact disc की तरह ही काम करती है, बट इसके जो फीचर्स है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो उससे enhanced थी, मतलब उससे improved कैपेसिटी, उससे improved क्वालिटी. किसके लिए? वीडियो या फिर ऑडियो के फॉर्मेट्स के लिए. And it is a digital optical disk storage format that is used to store high capacity data like high quality video and movies. It is also used to store the operating system, and it was invented and developed by 4 companies named Philips, Sony, Toshiba and Panasonic during 1995. मतलब इसको 4 कंपनीज ने डेवलप किया था. एंड DVDs provide higher storage capacity than CDs and can be played in multiple types of players like DVD players. So this is the basic interface of DVD. The next storage device is CD-ROM, which is also known as compact disc read-only memory. A CD-ROM is a CD that can be read by a computer with an optical drive. ये आपके पास एक ऐसी CD है जिसको मतलब कैसे रीड किया जा सकता है by a computer but with an optical drive. The ROM part of the term means that the data on the disk is read only or can't be altered or erased. Because of this feature and their large capacity, CD-ROMs are a great media format for retail software. जो हम इसको बोलते हैं CD-ROM. ROM पार्ट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर डाटा को हम रीड कर सकते हैं. We can alter data or we can erase the data or we can't rewrite the data on CD-ROMs. The first CD-ROMs could hold about 600 MB of data, but now they can hold up to 700 MB. मतलब पहले ये कितनी इसकी रेंज थी 600 MB ऑफ डाटा को होल्ड करके रखने की, बट नाउ इट हैज सक्सीडेड टू 700 MB. एंड द लास्ट पॉइंट इज CD-ROMs, they share the same technology as audio CDs, but they are formatted differently, allowing them to store many types of data. मतलब कि जो ये सेम मतलब टेक्नोलॉजीज को शेयर करती हैं, बट दे आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली. मतलब उनको जो फॉर्मेट किया जाता है उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है. डन. सो नाउ वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज CD-ROM players. Okay,
Also called a CD-ROM drive, a device that can read information from a CD-ROM. इसको हम CD-ROM drive भी बोलते हैं. ये एक ऐसी डिवाइस मानी जाती है जिसको CD-ROM से डाटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं. CD-ROM players can be either internal, in which case they fit in a bay, or external, in which case they generally connect to the computer's SCSI interface or parallel port. ये आपको एक इंटरनल फॉर्म में भी मिल सकती हैं या फिर एक ऐसी फॉर्म में जो एक बे के अंदर फिट हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल जिसके इसके अंदर इसको क्या किया जाता है कंप्यूटर के SCSI इंटरफेस की हेल्प के साथ इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज CD रिकॉर्डर्स या फिर CD बर्नर्स. जैसे इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, नेम इज सिंप्लीफाइंग दैट CD रिकॉर्डर्स और बर्नर्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड डाटा या फिर बर्न डाटा. अ CD burner is the informal name for a CD recorder, a device that can record data to a compact disk. मतलब ये आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको CD के ऊपर आप डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए या उसको राइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. And the second point is a CD burner is a device that records information onto compact discs. ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं. इट टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैटर enclosure with a slot or tray into which compact discs are inserted. इसकी फॉर्म क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैटर के तरह है जिसके अंदर जिसको आप इनक्लोज करते हो विद अ स्लॉट और ट्रे इनटू व्हिच द कॉम्पैक्ट डिस्क्स आर इंसर्टेड. उसके अंदर आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क को इंसर्ट किया जाता है. A laser inside the enclosure burns digital information onto the disk. जब आप उसको enclose कर देते हो या अपने कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है, देन उनके ऊपर डाटा को डिजिटल फॉर्म के अंदर उसको राइट किया जाता है. मतलब डिजिटल फॉर्मेट के अंदर उसको राइट करना या उसको बर्न करना onto the compact disk, which can in turn be read on standard CD reading and playback devices. Right? जो आपने डिजिटल फॉर्म के अंदर उस डाटा को कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर राइट किया है उसको उसी फॉर्म के अंदर आप डाटा को रीड भी करवाया जाता है with the help of reading या फिर playback devices. So it was a CD recorder or a CD burner. Here is the topic of video disc or video disc players. So video disc also spelled as video disc. मतलब आप इसको DISC के नाम से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं या DISC. It is a rigid circular plate of either metal or plastic that is used to record the videos and audio signals for playback. राइट, ये आपके पास एक सर्कुलर प्लेट मानी जाती है जिसको जो किस फॉर्म में आती है, मेटल या फिर प्लास्टिक के फॉर्म में भी आती है, जिसको हम वीडियोस या ऑडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं. इट रिजेंबल्स अ फोनोग्राफ रिकॉर्ड, मतलब एक फोनोग्राफ की तरह दिखने वाली है. इट कैन बी प्लेड ऑन अ डिस्क मशीन अटैच्ड टू अ कन्वेंशनल टेलीविजन रिसीवर. डन. सो देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ वीडियो डिस्क. दे आर नोन एज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. So now we are going to switch to our next topic, which is very simple and which is very easy. These are the input devices. Now input device is what? Input device is a term for a physical piece of hardware that connects to a primary device like a computer in order to provide user input. तो जो आपके पास एक इनपुट डिवाइस है वो क्या मानी जाती है, एक तरह के हार्डवेयर डिवाइस मानी जाती है जिसको हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं. लाइक आपका कंप्यूटर सिस्टम है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम. Input devices are generally a class of peripheral devices that connect to the primary device. मतलब ये आपके पास एक ऐसी पेरिफेरल डिवाइस भी हमको मानते हैं जिसको आप कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हो. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की, विच में इंक्लूड द कीबोर्ड्स, माउस डिवाइसेस, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन्स एंड द वेब कैमरास. So here is the topic of keyboard entry. कीबोर्ड एंट्री क्या होती है? इन कीबोर्ड एंट्री या यूजर टाइप्स द कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल सिंबल्स यूजिंग अ कीबोर्ड. उसके नेम से ही पता चल रहा है कि कीबोर्ड एंट्री, कीबोर्ड के थ्रू आप कैरेक्टर्स को या न्यूमेरिक्स को या कुछ स्पेशल सिंबल्स को आगे फिर आप उनको एंटर करवाते हो. जब आप एक की प्रेस करते हो तो आप उसके थ्रू आपकी इनपुट पहुंचती है सिस्टम के पास. द इनपुट यूजुअली अपीयर्स ऑन अ मॉनिटर. तो वो मॉनिटर आपको उसी फॉर्म के अंदर जो आपने
चाहे कोई कैरेक्टर आपने इंसर्ट किया है, चाहे न्यूमेरिक, चाहे कोई अपने स्पेशल सिंबल प्रेस किया है, तो वो आपको उसके आउटपुट पे जनरेट करवाता है। अ कीबोर्ड एंट्री माइट बी द मोस्ट कॉमन वे टू इनपुट द डेटा। ठीक है, जो कीबोर्ड एंट्री है वो एक सबसे कॉमन वे माना जाता है डाटा को इनपुट करवाने के लिए। Here is keyboards. A keyboard जो है हमारे पास वो कैसी डिवाइस है? That is a device that is used to encode data by key depression which enters information into a system. आप इसके हेल्प से डाटा को एनकोड करते हो with the help of key depression. Okay, and the keyboard converts alphabets and numbers and other special symbols into electrical signals that processor can understand and process. तो जो आपके पास कीबोर्ड है वो अल्फा न्यूमेरिक को या फिर नंबर्स को एंड सब आगे बढ़ते जो आपके सिंबल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हेल्प से उनको इनपुट करवाते हैं, जिसको प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है और उनको आगे वो एग्जीक्यूट करता है। So these signals are sent to the computer's CPU. And there are 3 different layouts: QWERTY, AZERTY, DEVOP. ओके, अब हमारे पास QWERTY, दिस इज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। आपके पास एक तरह की लेआउट है जो आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली लाइन में रिजाइड करती है। इट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द अपर लेफ्ट कॉर्नर 6 लेटर्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द अल्फाबेटिक कीज। आप अपने कीबोर्ड के अंदर अगर देखोगे तो सबसे ऊपर वाली जो आपकी अल्फाबेटिकल रो होती है उसके आपके जो पहले 6 कैरेक्टर होते हैं QWERTY, this is known as the QWERTY standard keyboard layout. AZERTY, this is a keyboard layout that is similar to QWERTY layout and some European countries use this keyboard. This layout is slightly modified from the QWERTY keyboard. तो ये भी एक तरह की उसी से सिमिलरिटी थी, बट उससे ये थोड़ी सी क्या हुई, डिफरेंट हुई है। एंड DCAP का पास आता है थर्ड पॉइंट ऑफ keyboards. This is another keyboard layout modified greatly from a standard layout. ये भी उसी जो आपकी स्टैंडर्ड लेआउट है उससे मॉडिफाई करके इसको डेवलप किया गया है। The keyboard is devised to increase the typing speed by placing frequently used keys more naturally. मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आप इसको यूज करते हो। And now moving to the next topic, which is terminals. So now टर्मिनल क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर? A terminal is an input or output device that usually includes a keyboard for input, ठीक है, a video display for output and a communications link to send and receive information. तो ये आपके पास एक ऐसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस मानी जाती है जो जिसको आप अपने जिसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड को एज एन इनपुट डिवाइस और वीडियो डिस्प्ले को एज एन आउटपुट डिवाइस, और आगे फर्दर हम क्या यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन लिंक यूज करते हैं। किसके लिए? डाटा को सेंड करने के लिए या फिर उसको रिसीव करने के लिए। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स। द फर्स्ट वन इज डंब टर्मिनल। दिस इज एन इनपुट और आउटपुट टर्मिनल दैट डजंट हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसीलिए इसको डंप बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर आपके डाटा की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। इट ओनली एंटर्स एंड रिसीव्स डाटा विदाउट प्रोसेसिंग। डाटा को ये एंटर कर सकता है, उसको रिसीव कर सकता है, बट उसकी प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी इसमें नहीं होती। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्मार्ट टर्मिनल। This terminal has some processing capability. It has a small memory. ठीक है, इसके अंदर आपके पास इसको स्मार्ट लिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है, बट इसकी मेमोरी जो है वो थोड़ी स्मॉल है। It performs some editing of data before sending them to a main computer. Right, ये डाटा को मेन कंप्यूटर के अंदर सेंड करने से पहले उसके ऊपर एडिटिंग परफॉर्म करता है। And the third one is intelligent terminal. This is a terminal that has a full processing capability. That's why it's referred to as an intelligent terminal because it can perform the full processing on the data. The terminal has a processing unit, primary storage, मतलब इसके पास अपनी processing unit भी है और primary storage की unit भी है। It may or may not have the local storage. Local storage इसके अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। Now switching to the next topic, which is pointing devices. A pointing device is an input interface. Pointing device भी आपके पास एक तरह की input device भी होती है that allows a user to input the spatial
कंटिन्यूअस एंड मल्टी-डायमेंशनल डेटा टू अ कंप्यूटर, मतलब इसकी हेल्प से भी आप अपने डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर करवाते हो। मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस आर इक्वल्ड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटर एंड अदर विजुअल चेंजेस। डन। अगर आप अपनी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर कोई मूवमेंट करते हो तो वो मूवमेंट जो होती है स्क्रीन के ऊपर भी उसकी इको परफॉर्म हो जाती है, या फिर आपका जैसे कर्सर मूव होता है उसी फॉर्म के अंदर। The major pointing device is the mouse for the desktop computer and the touchpad for the laptop, right? जब हम अपने माउस यूज करते हैं वो आपकी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि उसके अंदर भी हम चीजों को लोकेट करने के लिए, उनको पोजीशन करने के लिए एक पॉइंट को यूज करते हैं, and as it is also similar to the touchpad that we use on our laptops. Although many road warriors bring along a mouse, right? पॉइंटिंग स्टिक्स आर अवेलेबल ऑन सम लैपटॉप्स, राइट? कुछ लैपटॉप्स के ऊपर आप पॉइंटिंग स्टिक्स को भी यूज करते हो। एज अ स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स प्रेफर ट्रैक बॉल्स ओवर द माउस एंड लाइक माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल एंड पॉइंटिंग स्टिक्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज output devices. As its name is simplifying, this is the output device which represent the output or results or outcomes which are entered by the input devices. An output device is any piece of computer hardware equipment which converts information into human readable form. तो आपके पास जो output device है वो एक ऐसा कंप्यूटर का हार्डवेयर पीस माना जाता है, एक ऐसा इक्विपमेंट माना जाता है जो हमारी इंफॉर्मेशन को, जो कि आपने कीबोर्ड या किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से आपने एंटर करवाई है, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। So some of the output devices are visual display units like monitor, printer, graphic output devices, plotters, speakers, etc. Done? And the next point in this topic is usually most output peripherals are meant for human use. So they receive the processed data from the computer and transform it in the form of audio, video or physical reproductions. हम लोग human जो फॉर्म के अंदर, हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर हम डाटा को इसके अंदर सी करते हैं, उसको देखते हैं, उसको रिसीव करते हैं एंड उसको कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें हमारी एक तरह की आउटपुट मानी जाती है। एंड वो किसी भी फॉर्म में, आपकी जो आउटपुट होती है वो आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है। And typical examples of output devices are monitors and projectors and headphones, speakers, printers, plotters. These all are the examples of output devices. And moving to the next topic, which is sound recording equipment. As its name is defining, this is a system or this is an equipment that is used to record the sounds. The use of sound in its various form is a component of multimedia application. तो एक काफी important component माना जाता है multimedia application के अंदर। The quality of the recording equipment is important in determining the final quality of the sound. Right? आपके जो आपका recording equipment है उसकी quality काफी important मानी जाती है, because वो आपकी final product, जो आपकी final sound represent होने जा रही है या produce होने जा रही है, उसकी quality को वो अफेक्ट करती है। And sound recording equipment ranges from a simple tape cassette recorders for low budget amateur sound productions to a fully equipped professional recording studios, right? ये मतलब एक small tape cassette से लेके एक बहुत fully equipped professional recording studio तक इनकी range जो है वो जाती है। And the essential pieces of hardware for recording sounds are microphones, musical instruments, digital audio tape recorder. तो ये आपके पास कुछ ऐसे hardware devices माने जाते हैं, microphones, musical instruments. These come under this category. And moving to the next topic, which is speakers. Speakers are one of the most common output device that is used with the computer system. तो ये बहुत से common output device मानी जाती है जो हम लोग अपने computer system के अंदर use करते हैं। Regardless of their design, the purpose of speaker is to produce the audio output that can be heard by the listener. ठीक है, तो आपके पास जो उसके डिजाइन के अलावा इसका स्पीकर का मेनली पर्पस क्या होता है? ऑडियो की आउटपुट जनरेट करना, जिसको लिसनर्स सुनते हैं। जैसे हम लोग भी अगर उसको सुनते हैं, then we are the listeners with having the output in the format of audio.
And the third point is speakers are transducers that convert electromagnetic waves into sound waves. तो ये आपके पास एक ऐसे ट्रांसड्यूसर्स माने जाते हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं. एंड द स्पीकर्स रिसीव ऑडियो इनपुट फ्रॉम अ डिवाइस लाइक as a computer or as an audio receiver, and this input may be either in analog या फिर digital form. And switching to the next topic, which is monitors. The most important output device for multimedia development and delivery is the monitor. जो monitor है वो सबसे common, सबसे important, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक तरह की आउटपुट डिवाइस मानी जाती है. Thus, the quality of monitors and the graph display cards that drive them are important considerations for multimedia developers. Right, monitors की quality बहुत मैटर करती है, जो हम उसके अंदर graphic cards यूज करते हैं वो काफी ज्यादा important considerations मानी जाती हैं for the multimedia developers. And multimedia developers need to use the 17 inches or 19 inches monitors in order to have room to display the multimedia application under development. And the next point is some multimedia developers use two monitors that are driven using the special graphic cards so that they can see the multimedia application on one screen and have the tools displayed on the other. तो यहाँ पे आपके टू मॉनिटर्स यूज किए जाते हैं. एक के ऊपर आप क्या कर सकते हो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की स्क्रीन की उसको देख सकते हो और दूसरे के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा सकते हो उसके टूल्स को. An important type of monitor for use in point of information application is touch screen, which are both input and output devices. Right? Touch screens are an intuitive way for users to interact with the multimedia application by allowing them to touch the buttons and links directly rather than indirectly via a mouse or other pointing devices. So touch screens जो वो काफी important मानी जाती है और काफी यूजेबल भी है, कन्वीनियंटली आप उसको यूज कर सकते हो in order to have the input and output as well. Touch screens include three key components. कौन से components हैं यहाँ पे? The first one is touch screen sensor panel that generates a voltage in order to indicate where the screen was touched. Right? ये आपको ये बताएगा कि कहाँ पे आपकी स्क्रीन को टच किया गया है. And the second point, the controller. आपको यहाँ पे दूसरा component कौन सा है? Controller that converts the voltage into a digital signal and transmits it to the processor. And the third point क्या है? आपके पास एक ऐसा software driver in order to translate the digital signal into data that emulates the mouse. So these were the key components. Now moving to the next topic, which is video recording equipment. As we have discussed about the sound recording equipment, now this is a video recording equipment. Video recording is what? It is a recording of both the visual and audible components. मतलब वीडियो में क्या है, visual and audible दोनों components को इकट्ठे रिकॉर्ड किया जाता है. And वीडियो के अंदर क्या आता है? रिकॉर्डिंग. A storage device on which information have been recorded. ठीक है, एक डिवाइस ऐसी मानी जाती है जिसके ऊपर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, साउंड या इमेजेस, उनको रिकॉर्ड किया जाता है. वीडियो कैसेट्स, अ कैसेट फॉर वीडियो टेप, ये यूज की जाती है. वीडियो टेप, अ वीडियो रिकॉर्डिंग मेड ऑन मैग्नेटिक टेप. डन. And basic video recording equipment include either an analog or digital video cameras या फिर a video capture card installed on a desktop computer. These are the equipments that may be included in the video recording equipments. And video capture cards are different to graphic display cards which are not capable of video captures. Okay, the next topic is projectors, which are also considered to be very important kind of output devices. A projector is an output device that takes images generated by a computer or Blu-ray player and reproduce them by projection on a screen, wall or another surface. मतलब प्रोजेक्टर की हेल्प से आप अपनी जो कंप्यूटर के थ्रू जो इमेज या फिर जो भी इनपुट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है उसको आप प्रोजेक्टर की हेल्प से किसी भी वॉल, किसी भी स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले करवा सकते हो इजीली, उसको रिप्रोड्यूस करवाना. एंड इन मोस्ट केसेस द सरफेस प्रोजेक्टेड ऑनटू इज लार्ज
फ्लैट एंड लाइटली कलर्ड, राइट। ये जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के थ्रू इनपुट को प्रोजेक्ट करवाते हो तो वो काफी एक लार्ज स्क्रीन मानी जाती है, जो फ्लैट भी होती है, जो लाइटली कलरफुल भी होती है। And for instance, you could use a projector to show a presentation on a large screen so that everyone is in the room can see it, right? जो प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को या जो आपका डाटा है, जो आपके कंप्यूटर के थ्रू जो आप इनपुट जो है डिस्प्ले करवाते हो, वो एक लार्ज स्क्रीन के ऊपर करवाई जाती है ताकि उसको सारे लोग इजीली और कन्वीनियंटली उसको देख सकें। Projectors can produce either the still or moving images, right? आप प्रोजेक्टर के थ्रू दोनों ही चीजों को डिस्प्ले करवा सकते हो, चाहे वो एक स्टिल स्टैटिक इमेजेस हो, स्लाइड्स हो आपकी प्रेजेंटेशन की, या फिर आप मूविंग इमेजेस की, या फिर आपने अगर कोई वीडियो जो है वो डिस्प्ले करवानी हो। A projector is often about the size of a toaster and weighs only a few pounds. इसका मतलब हाइट और वेट कितनी होती है। And the next point is printers. Printer is also an output device that prints the paper documents. As we know about the printers, this includes text documents, images, or combination of both. And the two most common types of printers are inkjet and laser printers. मतलब inkjet और laser printers काफी commonly used varieties मानी जाती हैं। Inkjet printers are commonly used by the consumers, while laser printers are typically choice for businesses. इंकजेट को आप कंज्यूमर्स की साइड से भी आप मतलब यूज किया जा सकता है, मतलब जहाँ पे इतनी ज्यादा बल्क के अंदर डाटा को ना प्रिंट करना हो। लेकिन जो लेजर प्रिंटर्स हैं उनको हम बिजनेस कमिटीज के अंदर यूज करते हैं। And next one is dot matrix printers, which have become increasingly rare. They are still used for basic text printer. अब इनको इतना ज्यादा नहीं यूज किया जाता। And the printed output produced by a printer is often called a hard copy, right? जो आपकी प्रिंटर की तरफ से जो आउटपुट जनरेट की जाती है उसको हार्ड कॉपी माना जाता है, which is the physical version of an electronic document. Done. And the next point is while some printers can only print black and white hard copies, most printers today can produce the color prints too. राइट जो प्रिंटर की बेसिक आउटपुट फॉर्म होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर होती है, लेकिन उसके बिना यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं जो कलरफुल प्रिंट की ऑप्शन भी अवेलेबल करवाते हैं। In fact, many home printers can now produce high quality photos prints that rival professionally developed the photos. And this is because modern printers have a high DPI, dots per inch setting, which allows documents to printed with a फाइन रेजोल्यूशन। मतलब अब जो आपके पास नेक्स्ट प्रिंटर्स की वर्जन जो आ रही है वो काफी डेवलप्ड हैं, इम्प्रूव्ड हैं, एनहांस्ड हैं, जिनकी क्वालिटीज काफी अच्छी हैं और उनके रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा होता है। दैट्स व्हाई आप उसके अंदर आपकी जो क्वालिटी है आउटपुट की वो बेटर मानी जाती है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वंस। सो इट वाज आवर unit 6 which was hardware. So this is the end of this unit. I hope all the topics are